Presenting by Pragya Institute of IT and Research. In today's C programming language, data type constant variable keywords. सी प्रोग्रामिंग भाषा में डेटा प्रकार डेटा के प्रकार को परिभाषित करते हैं जिसे एक चर धारण कर सकता है। इन डेटा प्रकारों को कई समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। बेसिक डेटा प्रकार इंटीजर टाइप्स, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स, कैरेक्टर टाइप्स। सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उनसे सिर्फ संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उनसे सफलता के लिए विचार मिलेंगे। In C programming, variables are used to store data values that can change during the execution of a program. A variable acts as a container for storing data, and it is associated with a specific type, such as int, float, or char. Rules for naming variables must begin with a letter or an underscore, can contain letters, digits, and underscores. Cannot be a C keyword, e.g. int, return, if, case sensitive, e.g. var and var are different, should be meaningful for better code readability. 1. Local variables declared inside a function or block. Accessible only within the function or block where declared. Not initialized automatically. 2. Global variables declared outside of all functions. Accessible by all functions in the program. Initialized to 0 by default. Keywords in C are reserved words that have predefined meanings and cannot be used as variable names, function names, or identifiers. These keywords are an integral part of the syntax of the C language. Rules for keywords: keywords must always be written in lowercase. They cannot be used as variable names, function names, or identifiers. Keywords are a fixed part of the C language syntax. तुम बहुत अच्छी हो माँ, देख लेना। एक दिन मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसा काम करूंगा कि मेरा फोटो फ्रंट पेज पे छपेगा। फिर तू खुश और पापा भी डबल खुश। कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे Pragya Institute of IT and Research welcomes all you promising students in future technology.